Namaskar friends. Today, Bharat Bandh has been called by 10 trade unions, including INTUC, INTUC, C2, SEWA, LPE, UTUC, and dozens of other trade unions. I am told that over 25 crore workers and farmers unions are participating today in Bharat Bandh. Why Bharat Bandh? Perhaps because BJP's new translation is B for Bandh Karo, J for Jobs Chino, and P for Fasad Karwao. Today, the trade unions of the country are on strike on Bharat Bandh. Why? The first and most principal issue is there are no jobs for the young in the country. Over 30 lakh jobs in public sector undertakings in Government of India are today lying vacant, but Prime Minister Modi and BJP government refuses to fill them. Some of the examples are, there are 2,50,000 vacancies in Indian Railways. There are 1,55,000 vacancies in India's armed forces, our Army, Navy, Air Force. There are 85,000 vacancies in Central Armed Police Forces, CRPF, BSF, ITBP. A question must be asked, why is Government of India refusing to fill up these 30 lakh vacancies and provide jobs to India's youth? Another facet is unemployment. Even for, as per admitted rate, is at about 7.5%. As per Center for Monitoring of Indian Economy, it is over 10%. Among the graduates and postgraduates, unemployment is nearly 30%. Unemployment in India is at a 45-year high. There are no jobs. And that's why trade unions are trying to draw attention of Modi government by going on Bharat Bandh today. Manrega, the instrument of livelihood for the poor, marginalized, SC, ST, OBCs, is under attack by Prime Minister Modi and his government. The budget for Manrega has got stagnated at about 86,000 crores. Out of that, 10,000 crores are always paid in last year's dues. We gave 100 days of statutory guarantee of work every year, but Government of India has now shown that we only provide 44 days of work and not 100 days of work. 7 crore people, Manrega workers, have lost right to work on account of linkage of Manrega with Aadhaar. These are questions that our trade unions are today raising. Wealth inequality is one of the biggest issues that plagues India today. Amir, Garib or Garib. Friends, 10% of Indians have 77% of India's wealth, while the bottom 15% of Indians have only 10% of India's wealth. How will the country run? India today is the 50th poorest country in the world by way of per capita income, next only to Bangladesh, next only to Cambodia, Haiti and Kenya. The world per capita income is over $14,000. Ours is $2,900 per year. India today ranks at 111th rank out of 125 in global hunger index.
India today ranks 134th out of 193 countries in the Human Development Index. India today ranks 127th out of 146 countries in the Global Gender Gap Index. India today ranks 121 out of 173 in Global Quality of Life Index. And India today ranks, this is for you, 159th position out of 180 in the Global Press Freedom Index. That's why trade unions are on strike. And our economy is in huge distress today. Why? I want to give you 4 or 5 indices. There is a huge drop in motorcycle and scooter sales used by common people. The companies are saying so. There is a huge drop in sale of fast moving consumer goods. Hindustan Lever is saying so, Dabur is saying so, and Marico is saying so. Who buys a packet of Maggi, a packet of biscuits? Common middle class, salaried class people. There is a huge crisis in textile sector. From Tirupur in Tamil Nadu to Panipat in Haryana to Surat in Gujarat, there is a 30% production drop. That means people are not buying enough. They don't have the money to buy. There is a huge crisis in the real estate sector. There are nearly 10 lakh units for middle income and low income groups that are lying vacant. People are buying flat worth hundreds of crores, but there is no money with salaried class to buy a flat for 50 lakh, 40 lakh, 30 lakh rupees. That is the crisis. And there is wage squeeze. I am not saying so. FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce, along with Quest Corp Limited, they did a survey. And that survey told us that while wages have increased by 0.8% to 5%, inflation is 5.7 to 6%. So wages are not even increasing as per the inflation rate. Where should the middle class go? Where should salaried class go? Where should the poor go? I am sure you as journalists also face the same quandary every day at home. And 80% of India's workforce is in unorganized sector. The same survey says that 60% of India's workers don't have a written contract. Then how will they have job security if they don't have a written contract? 53% of India's workers don't have any social security. That means no insurance, no pension, no nothing else. This is the crisis that is building in India, and that's why India's trade unions and 25 crore workers are on strike today. We urge upon Modi government and the BJP, both in Karnataka as also nationally, to open their eyes and see the problems that people face today. I'll say very, very briefly in Hindi for my friends in North India. आज 10 से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस, इंटक, INTUC और सेवा और दूसरी ट्रेड यूनियंस, उन्होंने भारत बंद की कॉल दी है। 25 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हड़ताल पर हैं, देशव्यापी हड़ताल है। आज जागकर सोचने की जरूरत है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है मोदी राज में व्यापार मंदा, रोजगार गायब, कल कारखाने बंद, छोटे उद्योग खत्म, महंगाई की मार, निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की तबाही, सरकारी कंपनियों का सौदा दोस्तों को, और मोदी जी कहते हैं सब चंगा। मोदी जी असली में सब मंदा, सब चंगा नहीं। असलियत ये है, वो गोनवी साहब की 2 लाइनें हैं जो
मोदी जी और भाजपा पर साबित होती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आज अगर 25 करोड़ लोग हड़ताल पर हैं तो वो इसलिए हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, भारत सरकार में भी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी। अकेले रेलवे में 2.5 लाख नौकरी खाली है, तीनों सेनाओं में 1,55,000 नौकरियां खाली हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि में 85,000 नौकरियां खाली हैं। बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसका संज्ञान भाजपा कब लेगी? यही नहीं, देश में आर्थिक असमानता है। देश के 10% लोगों के पास देश की 77% संपत्ति और आय है, और सबसे गरीब 15% के पास केवल 10% है। मनरेगा पर जो गरीबों की आय और रोजगार का हथियार है, उस पर हमला बोला गया है। 100 दिन का काम घटकर 44 दिन रह गया है। मनरेगा का बजट काटा जा रहा है, मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा। हमारे मजदूर भाई कहां जाएं? निजीकरण यौवन पर है और भारत और गरीब होता जा रहा है। जैसा मैंने बताया, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत आज प्रति व्यक्ति आय में 50वां सबसे गरीब देश बन गया है। पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति आय की औसत है $14,200 के करीब, और भारत में ये $2,900 है। हम लगभग बांग्लादेश के, कीनिया के, कंबोडिया के और हेती के बराबर पहुंच गए हैं। भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान 111वां पहुंच गया है 125 मुल्कों में, यानी यहां भूखमरी चरम सीमा पर है। भारत में 193 देशों में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचांक हमारा 134वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप में 146 मुल्कों में हम 127वें नंबर पर हैं। वैश्विक जीवन गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हम 173 देशों में 121वें नंबर पर हैं, और प्रेस फ्रीडम में हम 180 देशों में 159 नंबर पे हैं। ये देश कैसे चलेगा? पूरी अर्थव्यवस्था मंदे की कगार पर खड़ी है। इसलिए हम उन 25 करोड़ मजदूरों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अपनी आवाज जोड़ती है और मोदी सरकार को चेताती है कि इन 25 करोड़ भारत बंद पर गए मजदूरों की हड़ताल के मुद्दों को सुनिए और इसका सार्थक हल निकालिए, वरना इसे एक चेतावनी मानिए जो एक बड़े बलबले का अंदेशा है। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फर्स्ट लेट्स आंसर दिस एंड देन आई विल टेक दैट। सरकार बार-बार इस इशू को उठा दी जा रही है और फार्मर्स एसोसिएशन से लेकर ट्रेड यूनियन के एम्प्लॉयज वर्कर तक हर बार वो रोड पे आते हैं इसी विषय को लेकर, लेकिन अब तक सरकार उसके बारे में कोई मुद्दा उठाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो लेबर मिनिस्ट्री हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी इस इशू को क्यों नेग्लेक्ट कर रही है? आदरणीय साथी, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने ट्रेड यूनियंस के साथ, और कांग्रेस की ट्रेड यूनियन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका हिस्सा है, हमने ये आवाज जोड़ी। प्रजातंत्र में एक बात जान लें, प्रजातंत्र में तानाशाही का स्थान नहीं, और प्रजातंत्र में जो सरकार लोगों की बात सुनने से इनकार कर दे वो बहुत देर सत्ता में नहीं रह सकती। उसे अपने पाप की सजा अवश्य जनता देगी और प्रजातांत्रिक और शांति प्रिय तरीके से देगी, ये हमारा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी अपना संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जारी रखेगी। जुलाई 21 से संसद का अधिवेशन जारी है, इस मुद्दे पर आपका कांग्रेस पार्टी का क्या दावा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुद्दे को संसद के अंदर भी उठाएगी, वो आर्थिक असमानता का मुद्दा हो,
वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो डूबती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, वो किसान और मजदूर के अधिकार का मुद्दा हो, वो उद्योगों के निजीकरण का मुद्दा हो, और वो क्रोनी कैपिटलिस्ट को भारत की अर्थव्यवस्था सौंप देने का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों को संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अवश्य उठाएगी। Sir, lorry association have called for a strike in Karnataka, which was actually buying all the food grains, which is associated with Annabhagya schemes. They say that close to 250 crore rupees, which should be released by Karnataka government, hasn't released, and the drivers are suffering, the owners are suffering. They have to pay EMI and loans and everything. Sir. What is the government doing, and what is your take on that? I have taken note of the news reports in this regard. I have also spoken to Chief Minister and Minister in charge. They have both told me that their funds, that A, they will be spoken to, and B, all outstanding payments would be released in a time-bound fashion. Sir, tomorrow Rahul Gandhi is holding a meeting regarding Karnataka politics, sir. Both CM, DCM, you, everyone will be there in that meeting. Very important developments in Karnataka, sir. I think this is purely imaginary. I have no knowledge of any such meeting. Yes, my Chief Minister and Deputy Chief Minister have travelled, as I said yesterday, to Delhi in order to raise issues of government of Karnataka and people of Karnataka with government of India. As we are aware, there is a designed discrimination and hatred in BJP and Modi government against people of Karnataka for voting them out. That hatred gets magnified by way of denying us various projects. For example, the Kalsa Bandure project, no permissions are being given. For example, Mekedatu project, it is being detained by Government of India. For example, our various demands for declaring various categories in backward class, scheduled tribe categories, various communities, is consistently denied. For example, GST funds are denied to people of Karnataka. For example, our share in the Finance Commission is repeatedly denied. It is our duty, it is the duty of Mr. Siddaramaiah and Mr. D.K. Shiv Kumar to go there and to place facts on behalf of people of Karnataka before them. Last question, sir. Last question.